Right. So maybe there's four things we can talk about one by one. Yeah. So one is Sanket can go next. Sanket joined in the first innovation challenge, and he's been working on a dashboard on agriculture insights. So as he talks about it, I think all the new participants and the community will also get a sense, right, of how we are taking some of these ideas forward. Um, then let me talk about this human wildlife conflict and other maps that we generated. And if some of you are interested, you can take up those projects. Um, Another idea that we can discuss is Shailaja has shared some documents about the Kiul River. And last time we had a brief discussion where we looked at some CoStack maps and we were discussing what can we do with that. So Shailaja has actually sent a very nice PDF on the atlas of the Kiul River. So we can talk about that, and we can see if we can use the CoStack datasets to generate that kind of an atlas, right? So then basically for any river, we will be able to do this. And fourth, Ananya is working on this project on groundwater using groundwater data. So we can also briefly talk about that and what kind of works are done using that. Um, Cool. So let's follow that agenda. Yeah, Sanket, you want to start it off? Yes, sure. For that, first I will share my screen. Yeah. So I think the message appeared that host disabled the attendee screen. Oh, Oh, yeah. each time actually I forget where the settings are now. So previously I was working at simple one district level data using core stack dashboard. So presently the same thing I'm doing and presently extending to the state level, which include the all the states. So right now I am trying to present one single state, Ahilyanagar, one single district, Ahilyanagar, which my findings contain different meaningful insight. So what presently I have done is with a few dialogue with Aditeshwar Seth sir, I tried to took a yearly raster of few years since 2017 to 2020, right? So in this some few years, I took yearly raster file for each pixel location. So the four collected value is there. So I applied that model value and then generated a new single GeoTIFF file. So where each pixel contain a model value. When we try to compare it with a different same year segment, we can see and we can measure the structural changes between those two layer files. So I have created two files at district level. Presently, uh, 2017 to 2022 and 2022 to 2020-25, and I left in between 2 year so that the Yeah. structural shift Sanket, can. can you see if you can share your screen now? Yes, definitely. So I was just giving some few Yeah, introductions. So yeah, what yeah. exactly I have done. So is my screen is visible right now? Yeah, it's coming up. Yeah. Yes, I don't know yes, why Zoom has I mean, hidden away the screen sharing in like some yes. multi-level. Yes. So presently, I tried to replicate such thing on entire district, Ahilyanagar district. Then I am trying after that. If it's working, then I will try to work on all the districts. So here you can see that I have generated one complete model analysis for two different entire layers, which represent a structural change. So as previously in I think last two section ago,
we discussed that while doing a hotspot analysis, which is predominantly a density analysis, where I set a parameter of if the value which cross the 8500, then we can consider those values as the agricultural hotspot. So presently I am using value 8 from core stack files which represent single kharif cropping patterns. So here we can see that many of the hotspots are generated in dark red colors. So the color black represent a district level market yard, and all of these green colors locations which represent APMC Mandi market, which I have individually collected from searching from a Google search engine and reliable sources and talking to the different people. Some were close, some were still working in functions. So through this way, I have collected those locations. Also, along with that, we can also see that not rivers location and some dam location, but not all the hotspot are closer or surrounded to the river or dam location, because most of here are barren land or built up land which are located. So my point of view is uh, how this whenever the agriculture produced happen, let's try to find out the distance how they approach to the market mandis, right? So how close they are. Even though before analyzing we can see that during 2017 and 20 and 2022 and 25, massive structural change is happening between those two kharif layer. You can see the southern part is mostly uh, active in kharif cropping in entirely 2017 to 20. But in 20 to 25 year, we can see a sudden decrease in those layer. So how we can trace that? We can also trace that changes. So I will show it afterwards. Mm. So I tried to measure the distance of the hotspot cluster to the market, whatever I state to you. But I predominantly take a major market yard, let's say district headquarter represented by district market plus sign. So how close they are. So in 2017 and 20, hotspot distance to market, the mean average distance come was around 53.2 kilometer. It means that those farmer who are producing the uh, in kharif season, they have on average have to travel 52 53 kilometers to reach the market yard to sell their goods and services, right? And the same structural change happened in 2020 to 25, where we can see the average distance was increases from 50 to 53 to 64 kilometers. So the hotspot was shifted away from the market yard. And again, the numbers of hotspot also decreases. So here I again try to generate some test statistics here. In 2017-20 layer, there were 265 hotspots were traced, and in 2022 and 25, the number of hotspots get reduced. It represented by 106 figures. And also we can also generate a test statistics like a distance, right? So those hotspots which are near in 2017-20s also shifted a little bit further away in 2020 to 25. Again, but maximum distance decreased by a few kilometers, and average distance increased by around 8 to 9 kilometers. So such findings we can generate through that. The same representation, we can see it here also. If you can see the graph, which shows that green to red color, which represent distance to nearest market, here we can see that the major market yard, where most of the markets are further away
from the location main mandi. And in next file of our raster file, the market went far away. And we can also present, uh, visualize such graphics in this file. Yes. So after that, what we can think of all of this data, ki how market proximity affect the Kharif intensification in this hotspot. On a left hand side, we can see the all hotspot of 265 hotspot represented in yellow color and 106 hotspot represented in green color. So we try to see with using scatter plot, is there any pattern, whether increase in distance to market affect the hotspot intensity. So in Ahilyanagar, we can't see such kind of pattern because all of the hotspot and distance to market, which is largely spread across all over the map. We can also try to use a regression analysis to find a meaningful insight. But here at this district, it doesn't represent much patterns. Yeah, and the standard error is also huge in that case. Also, if you put even a hypothesis test, so p value is greater than 0.05. So we can't see any pattern here. But if we do such analysis in other districts also, we can definitely see some kind of patterns. And again, the Sankey plot. So what Sankey plot represent? It is a flow chart shows how area move from one category to another. So in this chart, we can see the predominantly affected areas are single kharif crop and double kharif crop, where we can see the stable areas since all of those 2 years, which are 62% areas remain stable and 38% of areas in acreage which was affected. Means those areas are intensified or shifted from single kharif cropping to double kharif cropping, or from double kharif cropping to single kharif cropping. So I tried to generate some test statistics and try to figure out which are the five dominant pattern we can see in this Sankey plot. So some pattern is definitely coming up. Predominantly, farmers from Ahilyanagar are intensifying and also de-intensifying the agricultural practices, right? So those farmers are switching back and forth between these two crop practices, single and double kharif crop. So here we can see that single kharif crop which changes from 31% to 11%, and also double cropping was also decreased from here. So such points are also noticeable. We can trace using all those geospatial files, and which are available on CoreStack website, Explorer platform. So yeah, so my point is definitely go visit and try to explore it. And also another point I am trying to further look at it at, is it possible to do some try to link it with a present kharif, non-kharif, and summer crops, so I can generate some linkages with the crops. Yes, so that's it. Great. No, this is very, very interesting, Sanket. I had a Yes. couple of points. Yeah. So, for I think what you're calling Kharif intensification, Yes. I think let us change it to cropping intensification. Oh yes, yes. That. So, essentially, uh, what you are currently using for Kharif is basically single Kharif, right? Yes, That particular cross value that it you see. in that file. Right. So Yes. if Kharif intensification, what you're calling as Kharif intensification, what it actually means is that people are moving from single cropping to double cropping or triple cropping. Yes. So it's actually the inverse of normally how the term cropping intensification is used, right? Yes.
Yes. That cropping intensification is when somebody is going from single to double or double to triple, Yes. and de-intensification is the reverse. Yes. So uh, all that I think you need to do, that in those hexagons, Yeah. right now you're looking at percentage of area which is under single kharif. Yes. Yeah. Instead of that, do it on cropping intensity, Okay. where cropping intensity can simply be percentage of area under single cropping plus 2 times percentage of area under double cropping plus 3 times percentage of area under triple cropping. Okay. Yeah, upon weighted, right, upon 6. Yes. So basically, what that will then give you is an aggregate number on cropping intensity. Okay. Yeah. Uh, Maybe let me share my screen. This will be useful in general, I think, for everyone. Um, so, oops. You're able to see my screen now, right? Uh, Basically, under technical details, you can, or even on Google, if you just directly search for CoStack technical manual, you get over here. We will soon be releasing version 3 also, but in this version 2, there is a lot of detail about the different layers and data sets which are given. So the way we do it, uh, if you go to this land use land cover section, then these are the raster files which are available on Earth Engine, and they can be downloaded from explorer.corestack and everything, right? Which shows which areas are under single kharif, single non-kharif, double or triple, right? So Yes. triple basically means 3 crops being planted, double means 2 crops are planted, and this one is 1 crop only in kharif, and this is 1 crop after kharif. Yeah. So these are the raster maps which are available. So what Sanket is basically doing right now is that he's constructing hexagons, and within each hexagon, he's computing percentage of area which is under single kharif upon total. Yeah. Yes. But yeah, instead of that, let us do what we've written over here on cropping intensity. So cropping intensity is just 1 into percentage of area under single, 2 into and 3 into this, right? So cropping intensity actually, right? Basically, you can see whatever range you want to work in, but it can range. The max can be a 3. That every single cropping area is planting 3 crops in a year, or minimum can be 1, that everyone is only planting 1 crop in a year, Uh, right? will So doing that separately give a better result, or aggregating it will give a better result? my suggestion would be that uh, for the starting period, right, 2017, 18, 19, we will get a value of cropping intensity, and similarly for the ending period, 23, 24, 25, we will get another value. Yeah. Yes. And we can then look at the change. Okay. So you can see which areas are increasing in cropping intensity or which areas are decreasing in cropping intensity. Yeah, Yes. yeah. Yes. Um, and that then becomes very interesting to analyze, that relative to things like distance from mandi or distance from water bodies, which Yes. areas are intensifying or which areas are de-intensifying. Yeah. Yes. And right, plus of course, I mean that can be like the base analysis, but of course you can go deeper also, like you were showing. You can also calculate percentage of area transitioning from single to double, right? Yes. That also just becomes value that we are trying to explain based on other covariates Yes. like distance to mandi and so on, right? So that kind of analysis can also be done.
but a base analysis of how cropping intensity in any district, how is cropping intensity varying with distance from mandi locations or distance from water sources or canals. Yeah, that can be one thing. And another analysis can be a change analysis, that how is cropping intensity increase or decrease changing with respect to distance from different markets or distance from water bodies. Yes. Yeah. So yeah, so Yeah. that will be good. Um, yeah. And yeah, another quick point for people who may not know. So if over here, if you go to this thing for Pan India G layers, so this is just a placeholder Earth Engine app where we have uploaded all the data sets on LULC, right? So you have LULC over different years and two versions of that as well, right? But there are many other things which are out here, like uh, we've put up river networks, canal networks. So you can also look at distances from right. So the in some area you can of course look at water bodies. So if you load your LULC, um, then here you can see different water bodies, for example, and you can see how far are different areas from different water bodies. Yeah. But you can also look at canals, that how far is some cropping area from canals in this vicinity, right? So different types of water sources can be used for this analysis. And we will soon also be putting up maps of mandi locations also. So here only you'll also get maps for along with rivers and so on. Also maps for mandi locations and so on. Yeah. So that will be good to check. Yeah. Uh, Great. So any other points on anything, any ideas that somebody wants to discuss with Sanket? Yeah. Cool. But yeah, right. So this will be right. So just like you're seeing how Sanket has been using the data, right? It will be good if right, all of you can also think about different ideas and see how you can use some of these data sets. Yeah. Um, okay. So let me next briefly we touched a little bit about this last time. Let me talk about this other thing that we released recently. So this is again, if you go to technical knowledge, technical details, we put out this blog on mining insights from news events. So what we did over here, actually, we built a data set where we used a Google platform called GDelt. GDelt actually collects news articles from across the world from many newspapers, and you can query them. You can query them by category or by keywords. So we basically wrote a software to query GDelt for three types of events. One is human wildlife conflict, then crop damage events like droughts or pest attacks and so on, or bird flu like and then we ran them through different LLMs, uh, and we use the LLMs and Google's geocoding API to also situate where that event occurred. So so over here, for example, these are all sorts of events that have occurred, right? Like elephant deaths or right? Elephants are one prominent thing, right? Or
tiger conflicts, right? These kind of events are coming up. These are all news articles. So this is India TV News. This is Times Now News and so on, right? So these are all news articles that were downloaded from GDED and then processed and indexed. Yeah. So right, you can search, filter, look at seasonality. There's also a dashboard which shows across the years what type of conflicts were these across the states and so on, right? Um, and similarly, there are three types of events that we looked at: human wildlife conflict, then crop damage events. So these are basically uh, events like locust attacks, for example, or unseasonal rain, right? So these are the kind of events that were spotted and across these years, right? And there's seasonality and stuff as well. Um, so then the third type of event that we somebody suggested was on avian influenza, avian mortality. So here, of course, we know that poultry, bird flu in poultry farms is one key issue, but also other deaths of other wild birds. So these are these can be not able to go there. Yeah, but these are like wild crows or migratory birds, which from where infections might spread into poultry farms. So they were interested in seeing how the location and timing of these wild bird death reports coincides with avian flu bird deaths, where the infection comes in from the wild birds to domestic poultry. So, so all of these data sets can be downloaded, right? So you can download the GeoJSON, which internally will look something like this. So each one will have, right, what is the category of the event, event ID, what is the URL, title, the date, the species, right? And similarly other things, right? What is the location? Um, some more details, yeah, and so on, right? And plus, of course, the latitude, longitude, right? The location of that event. So, yeah, so anyone who's interested in looking, then we put up a whole bunch of ideas of what you could do. So these can be interesting, right? So especially for students who are kind of thinking about projects and stuff, right? These can be interesting things that you can try out. So on this blog, we put up a bunch of different ideas that for human wildlife conflicts, for example, right? Are these conflicts occurring more in areas which have seen deforestation? Yeah. Now, using core stack data sets, you can easily get all of this information, right? So you can, right, look at which areas were, let's say, forested, right, in 2017. Yeah. And right, so this data set is there, which areas remained forested in 2024, right? And areas which changed or which got deforested or any other kind of a change happened, you can find those out. You can do something very similar to what Sanket was showing, right? That how cropping intensity is changing in an area. In the same way, you can see how forest cover is changing in an area. Yeah. And then you can see that are these bird deaths, sorry, human wildlife conflicts, are they occurring, tending to occur more in areas where such deforestation or fragmentation has happened? Yeah. Um, so some more interesting things can also be done that this is giving you positive samples where human wildlife conflicts were reported. Yeah. Um, but there might be many locations where these have been happening, but they weren't covered by newspapers. So
if any of you are interested, we can discuss in more detail at some point offline or on the group. But there's some methods around pseudo absences that can be used for doing this kind of analysis. Yeah. Um, Similarly, on the avian mortality, um, uh, yeah, we can see which areas seem to be hotspots. Now, one place where such things also are known to occur frequently is around wetlands. So, wetlands is like a major category. Here, for example, we also extract the habitat from the news articles. So these are the habitats, and wetlands are a major category in which many of these kind of avian infections arise from. So this can be used to see which wetlands have had such events being reported, but are not covered under other citizen science initiatives like eBird. It can flag issue areas or wetlands that should be visited more frequently and where some tracking should be done. Um, Similarly, our poultry bird flu are occurring more frequently in areas close to wetlands, right? So a lot of this mashup of the land use land cover data sets, right? Like this can help spot wetlands as well, right? Water bodies and so on, right? So a lot of this sort of cross analysis can be done. Um, then there were a bunch of ideas around these crop damage events as well. Um, so I don't know if crop insurance data is available, but the government has a scheme on crop insurance, right? And we can see, right, which districts are reporting a lot of these crop damage events. Yeah. So you can, right, these are almost like 5,500 events or so. We can see which districts are they tending to occur in, and what is the crop insurance coverage in these areas, right? So if there's a difference, right, it can maybe the coverage is low, right? Or maybe it could also be a bias with news reporting, but still it could lead to some interesting ideas, interesting observations. Um, then there's also identify areas with compound events, right? That areas which saw droughts and dry spells during Kharif. We have the event dates, we have the event types, so we can see areas which saw droughts and dry spells during Kharif, and during Rabi, they saw unseasonal rain, right? So it's like a double whammy, right? So that in each season, because of climate change, we're seeing some of these issues. So, but this can help identify which areas are getting these kind of compound issues. Um, and then combine it with remote sensing. So here there are remote sensing indexes like NDVI, which indicate the greenness of an area. So we can see also what is the NDVI before the news report came out. Can it be used to do some kind of an early train a machine learning model which can help with some kind of an early warning that if the NDVI is looking like this or has changed like this, then that particular area could be getting into a drought phase. Yeah. And similarly, models for pest attacks, that areas where such pest attacks are happening, right? So these are, right, pest areas that we are seeing. Now, for any of these areas, uh, this is probably a mislabel, right? This is elephant damage, pest or disease, but it's coming under pest attacks. But yeah, that's the idea that you know the location where the pest attacks happened and the time. Now we can also look at what was the rainfall like at that point, what was the temperature like at that point, what was the wind speed at that point, what was the crop being grown at that point, right? So all of that information is available, and it can similarly be used to train models that under situations of this type, under weather conditions of this type, pest attacks are likely. And once you have that model, you can use weather forecast data to uh, put out pest warnings. Yeah. That these areas are at risk of pest attacks because according to the weather forecast is going to the rain and wind and other things are kind of ideal for pest attacks to happen. Yeah. So there's a lot of that kind of interesting stuff. Then similarly locust attacks, right? Now this is in 2020 actually. All of these things are
happened in 2020, most of these locust things. So, and these locusts actually travel from Pakistan and Rajasthan, this area. Uh, and these swarms then travel all across the country. Um, but you can actually use the timing information to trace the trajectory, right? That how did the locust travel? That itself would be a very nice visualization. Um, and that can potentially be used to also see that what is governing their direction of travel. Is it wind speed, wind direction? Is it temperature, right? Why are they moving from here to here and not here to here, right? Those kind of things could be very interesting to observe, right? And all of this area was not affected by locusts, it seems, but all of this area, and then it went down further in the south. So, yeah, so these are quite interesting things. So, in fact, right, all of these locust attacks, this locust, we showed it as a separate line. All of these happened in 2020. That was this year of some massive locust attack, right? And not much in other years, this particular line. So yes, I mean these are quite some interesting things that can be done. Um, so if any of you are interested in these kind of ideas, then yeah, I mean just pick it up and right, talk to us, write on the group, and we can discuss. Yeah. Um, cool. So any thoughts, any ideas from anyone? Hi. I just one query I had was what all languages would be covered? All vernacular languages or No, Hindi, yeah, no, English? actually, this is only English Text news mining. articles. Yeah, yeah. This was only based on English news articles. Now, so actually, I mean, by the way, all of this, the code was basically AI generated, and it's on GitHub. So if anyone wants to pick it up and do new things with it, try to do it in other languages, that's also going to be quite interesting. Yeah. But I just did this in English only. Yeah. Cool. Any other questions? Anything on this piece? You can also anyone who might want to work on it, you can also take a look at like a crop pattern or where different crops were or which crops certain insects prefer and which might have led them to move in certain directions. I mean, this is coming out to be very good, and if we can even point out directions and all these things, then we can build a kind of vectors around how things move and how different crops and then we can use that on planning also. So based on news articles you can observe a lot of patterns. There is no foundation now around knowledge around language also. If you want you can translate any languages articles into another language. You can on GDELT, all language articles are available. I think it covers around 80 languages or something. So you can actually check it out. It's a very wonderful resource. They've compiled all news articles, and there are such repositories or resources on another other different kinds of sources also, which you can explore using LLMs and then combine it with core stack data set and build something new. Um, Yeah. Yeah, exactly. So I mean, there's lots of possibility. Um, and yeah, likewise, I mean, if some new type of events you want to analyze, then that's also actually very much possible. Basically, all of these things are actually
working off a meta JSON. So we created these meta JSONs for human wildlife conflicts and crop damage and so on. We can similarly create it for any type of event, right? So this meta basically defines things like what keywords to search on, right? How to organize the data, right? That organized by species, organized by location type, right? Um, what categories to use, right? Or for drought, heat waves, right? Different things, right? And this is a prompt, right, which is used by the LLM, and it defines the taxonomy, and so on, right? So yes, I mean, basically the software essentially just reads this JSON and it does all the rest of the processing. So we did it for these three events, but we can use it to analyze other types of events as well. Yeah. Okay, so let me move to this very interesting discussion we had last time with Shailaja. And Shailaja, please step in whenever you want. Um, so Shailaja and Manoj have been working in Jharkhand and Bihar area on this river Kiul. So these are some pictures that they shared of the river. Basically, I mean, can it be called a river, right? I mean, you can see the state at which it is in, right? Many parts of the river are dried up and so on. Um, and last time we also looked at some of these CoStack data sets, um, for right. So if you look at this land use land cover, and if we go to uh, Kiul River in Bihar. So probably this is the river. And on the core stack, we've also put up these river maps. Yeah. So yeah, this is the Kiul River, right? So this is according to the river boundaries that have been published by the government, right? These are the river boundaries, right? Where the river is located, and it starts from Giridih in Jharkhand, and then it flows north through Bihar and eventually into the Ganga. So right, but when we look at this river on the map, right? So right, so this is the Google satellite map. You can see that it's very dry. And in fact, we see some, I'll also show another website. There's a lot of sand mining that happens on the Kiul. In fact, all of these tracks that you're seeing, yeah, a lot of these tracks are actually tracks by trucks, uh, which do sand mining. Yeah, but basically there's hardly any water. Now this could also be that it's a seasonal river and it dries up. When the satellite photo was taken, maybe it was dry. So in the core stack, we are able to do this kind of a water detection. Yeah. So this one shows that uh, some patches of the river, right, had water throughout the year in that year, right? So this is basically perennial water, uh, right? But basically it's just in bits and splotches. Yeah. Most of the river was barren land, right? Which means there's no vegetation or anything. It's just sand, and some parts get seasonal water. So, so this is matlab what the community also tells us on the ground, in areas like Jamui, where some of us have traveled, that it's in a bad state. Sand mining is one problem. Um, Plus, a lot of the rivers basically get recharged from surrounding areas, right? But
the more groundwater we consume for cropping, it means there is less infiltration into the river that happens. So one of the things we were talking about last time was that what sort of data can we put together to one, build some kind of a policy case that this river needs attention, and another, it requires more research, but from a with a hydrology modeling standpoint, can we can we think what kind of intervention should be done around the river, right? So hills around the river where, right, so like this is likely to be a a hill which is forested. Uh, Right. So, what kind of afforestation activities or some kind of water conservation activities on these hills can help improve the flow of water into the river? Or similarly, in other areas, what kind of activities in surrounding farmlands help improve the flow in the river? So those are some interesting problems to think about. The second piece will definitely require a background in hydrology, and we can think right now. I don't know how to really approach it, um, but there are other kinds of analysis that we can do just to convey in numbers to convey the state of the river. Yeah. So this is actually another interesting idea to actually pick up. Shailaja then shared, I think. Yeah. So Shailaja shared this Kiul River Atlas. Now, this is quite interesting. Basically, it's a PDF document, uh, but which gives details that what are the towns that the river flows through, for example, um, how much length is in which part of the river, um, then uh, what is the canal network in the Kiul River basin, right? So these basins and things can also be extracted. We actually have put up these maps on watershed boundaries, micro watershed boundaries, and so on. So a lot of these can be used to see which watersheds does the Kiul River flow through, and a union of those watersheds is basically the basin uh, of the main river. Um, and the network can be extended if we also look at other streams flowing into the Kiul, then you can basically get a overall basin map of the Kiul, right? And this is what it should look like. Yeah. And then we can also directly see which kind of canals are there, right? So the canal maps are also available. Uh, then what is the land use, land cover in the basin, which areas are forested, and so on. How have they changed over time? Yeah. Which are pretty much the same kind of, right? So this is LULC in 1516. This is LULC in 2022. Right? How has forest cover changed? What is the type of forest in this area? Rainfall. So a lot of these, in fact, I mean, to me, it seems that this whole atlas can be generated automatically. So for any kind of a river, we can actually build this kind of an atlas, and right, we can write class one, class two cities, um, and use it to see how the basin is changing over time, and is that affecting the overall health of the river. Um, and further analysis with hydrology and so on can also help us understand that which of the sub basins, for example, might be more critical, um, and they should be intervened in priority. So a lot of this, I think, can be done. We need to think more on. We need to get in touch with some hydrologists who work on river rejuvenation kind of projects. Um, but I think a lot of the data piece of the work can be done automatically, and
using many of the data sets that already exist with us. Yeah. So this is something we should definitely think more on. Um, that like this atlas also is just putting a lot of the data together. Um, then how can we actually use this data for coming up with some recommendations? Yeah. But yeah, this was thanks for sharing, Shailaja. This was quite eye-opening that what are the data points that people look at um, for this analysis. प्रोफेसर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं और मनोज हम दोनों साथ ही फील्ड विजिट करके आए हैं और मनोज को मुझसे भी कहीं ज्यादा जानकारी है इस नदी के बारे में। वो सिर्फ एक, जैसे मैं तो सिर्फ गिरडी ही गई थी, वो बाकी के क्षेत्रों में भी होके आए हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि छत्रा में भी ये रिवर है हम्म, हम्म, और 4 तरह के और डिस्ट्रिक्ट्स भी वहाँ पे मेंशन किए हैं। तो मनोज, मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार प्रोफेसर से यहाँ पे अपनी बात रखें और थोड़ा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको एक बार साझा करें सभी के साथ। yeah. यस बिल्कुल शैलजा, थैंक यू। हाँ, मैं इस रिवर को अभी 6 मंथ लगभग होने वाले हैं मॉनिटर कर रहा हूँ। लास्ट नवंबर से मैं इस रिवर्स पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट मुझे मिली थी क्यूल रिवर पे ही बुक राइटिंग का, तो उसी के सिलसिले में मैं विजिट कर रहा हूँ। तो दिसंबर में मैंने विजिट किया है। तो यहाँ के वाटर फ्लो जब अ, देख रहा था मैं, तो बहुत सारे मेजर फैक्टर्स है। सैंड का जो इश्यूज है वो तो है ही, प्लस शायद यहाँ पे माइका है। माइका का हम्म, खनन होता है ज्यादा। एक टाइम तो जो तीसरी पंचायत बोलते हैं जो हम्म, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, हम्म, यहाँ पे तीसरी पंचायत को माइका का ही क्षेत्र बोला जाता है। और ये कनेक्टेड है कोडरमा से लेकर के गिरिडीह तीसरी पंचायत तक, जहाँ की माइका का खनन, अब्रक अब्रक का माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। और मुझे जब फील्ड विजिट कर रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस नदी का ड्राई होने का कारण माइका का इलीगल माइनिंग है। और इलीगल माइनिंग है और साथ ही साथ ये बालू का उठाव जो बगल के हम्म, स्टेट इलीगल हम्म, माइनिंग करके सेल करने का हम्म, एक अ, घटना होती है, वो भी बहुत ज्यादा है। हम्म, और और साथ ही साथ इस क्षेत्र में अभी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, तो स्टोन माइनिंग भी होती है कहीं कहीं। तो जिसकी वजह, right. हाँ, जिसकी वजह से ये क्षेत्र और ये नदी सूखने के कगार पे अभी पहुंच गई है। और हम्म, मैं फील्ड विजिट गया था और लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने पिछले 20 सालों का 25 सालों का अनुभव बताया था कि जब छोटे नाले जो होते हैं, जो जिनसे हम्म, जाकर के नदी का निर्माण होता है, वो हम्म, उस नाले में भी बहुत गले तक पानी होती थी। हम्म, एटलीस्ट 5 फीट 4 फीट पानी होती थी। हम्म, और बट अभी स्थिति ये है कि वो वहां पे अभी तो घुटनों तक पानी नहीं होती अभी। हम्म, बारिश के समय, हाँ, बारिश के समय में काफी पानी रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी आने आते तक पूरा घुटनों से भी नीचे पानी होने लगता है। तो वहाँ पे हम्म, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्यूल रिवर को बचाने के लिए प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। छोटे छोटे चेक डैम बना रहे हैं। तो जब हम्म, जैसे अभी ने वो जो पिक्स शेयर किया है, उसमें हम्म, इसी छोटे छोटे नाला को बांध करके एक छोटा डैम डैम के रूप में अ, पानी को स्टोर करते हैं, जिससे कि ग्राउंड हम्म, वाटर रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर right. रिचार्ज, हाँ। तो उससे क्या हो रहा है, तो बहुत सारे नाले हैं जो कि जाके इस नदी में, क्यूल नदी में मिलते हैं। तो हम्म, वैसे नालों को आइडेंटिफाई करके, जिसमें कि मार्च अप्रैल तक पानी होती है, उनको इस तरह से सैंड बैग से बांधने का कोशिश किया जाता है। और वो okay. पानी, हाँ, उस पानी को स्टोर करने का कोशिश करके और ग्राउंड रिचार्ज पे काम किया जा रहा है। तो उससे ये हो क्या रहा है कि वहाँ के ग्राउंड वाटर जो है बहुत अच्छा हो गया है। हम्म, और ये एग्रीकल्चर पे तो
कम फोकस्ड है लोगों का। बेसिकली वहाँ जब से माइनिंग बंद हुआ अब्रक का, तब से वहाँ का पलायन, मतलब माइग्रेशंस लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो हम्म, लोग एग्रीकल्चर में फोकस नहीं हो हम्म, करके वो माइग्रेट करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रयास है उनका कि उनका जो लाइवलीहुड है वो उस नदियों पे डिपेंडेंट हो, और बहुत सारे चैलेंजेस है माइग्रेशन के, हम्म, तो वो सॉर्ट आउट। हाँ, तो ये उनका इस तरह का प्रयास चल रहा है वहाँ पे ग्राउंड्स पे। तो हम्म, मुझे भी बहुत अट्रैक्टिव लगा कि नहीं, सच में इस तरह का प्रयास झारखंड और बिहार के बॉर्डर एरिया में हो रहा है, और इस तरह का प्रोजेक्ट्स को लेकर के मुझे बुलाया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स कम्युनिटीज सबसे ज़्यादा है, और उनको बहुत अच्छे हम्म, से पता है वाटर बॉडीज को किस तरह प्रिजर्व करना होगा, प्रिजर्व हम्म, करना। तो हम्म, जिसका एग्जाम्पल मैं बोलता रहता हूँ, ये सिमोन उरांव है, हम्म, पद्मश्री अवार्डी है, जिन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है झारखंड का। हम्म, उन्होंने हम्म, बहुत अच्छे से वाटर बॉडीज को प्रिजर्व किया उसके देसी तकनीक के थ्रू। हम्म, तो टेक्निक मुझे वहां दिखा कि वो लोग सैंड बैग से उसको वाटर फ्लो को हम्म, रोकने का कोशिश कर रहे हैं, और राइट, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और राइट, हाँ, और फॉरेस्ट पे ये चीज दिखा मुझे कि फॉरेस्ट में वहाँ पे बहुत डिफॉरेस्टिंग हुआ है, हाँ, और जबकि वो एरिया बहुत फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट एरिया था वो। बट दो तीन कंपनियां थी, बंगाल पेपर्स करके एक कंपनी थी जिस जो कि बहुत ज्यादा वहाँ पे डिफॉरेस्टिंग की, हम्म, और वो हम्म, सलाई और, हाँ, सलाई और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए पेड़ों हम्म, को अंधाधुंध कटाई हुई, जिसके चलते हम्म, वहाँ बैरन बहुत ज्यादा हो गई है। हम्म, और खाली तक पूरा बैरन ही दिखेगा, जहाँ की खेती कुछ नहीं होती है। हम्म, और गांव के लोग उस बैरन लैंड पे वो मवेशी पालते हैं, छोड़ देते हैं। हम्म, और तो कैटल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी वो समस्या हो रही थी कि पानी कैसे हो। तो जब ये लोग हम्म, इनका प्रयास रहा सवेरा फाउंडेशन का, जो अभी ग्राउंड्स पे काम कर रही है, तो उनका ये प्रयास रहा कि वो जब वो नालों को बांध रहे थे, हम्म, और तो वहां से उनको कैटल को पानी भी मिल रही थी, और हम्म, जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो एक सॉइल में नमी है, नमी की वजह से ना अभी उनको हम्म, प्रचुर मात्रा में वो मिल रही है, घास, हाँ, चारागाह आ रहा। तो हाँ, तो वो उनके लिए एक लाइवलीहुड का एक अच्छा संसाधन बन के निकल रहा है। तो ग्राउंड इम्पैक्ट कुछ ना कुछ दिख रहा है मुझे। और ग्रेट, वहाँ एक प्रयास और ही हुआ है कि जब ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा हो रहा है, तो इनका प्रयास ये था कि वहाँ पे छोटे छोटे तालाब, कुएं गांव वालों को देने का प्रयास रहा उनका। तो वो लोग फंड विभिन्न तरह, बहुत जगह से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं, और वो उस पे काम कर रहे हैं ग्राउंड्स पे उनको कुएं और तालाब देने का। बट हम्म, चैलेंजेस यहाँ आ रही है कि जब यहाँ के टेक्निकल कंपनियां जा रही है, बट उन्हें हम्म, पता नहीं कि सच में जो ग्राउंड का वाटर जहाँ पे सबसे ज्यादा संभावना है मिलने की, हाँ, उस जगह पे कुआं ना खोद कर कहीं और दूसरे जगह में खोद रहे हैं, राइट, या राइट, हाँ, हाँ, तालाब उस जगह खोद रहे हैं जो कि वेस्ट है, मनी का हम्म, वेस्ट है, और बहुत सारी चीजें मेहनत और जो का। तो वहाँ पे जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनका वो हम्म, ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, वो काम आ हाँ, रहा है। तो उस राइट, पे मैं उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो उनका तरीका था, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये पानी का सबसे ज्यादा अ, पानी यहाँ इस स्थल से निकलेगा। हाँ, तो हाँ, वो प्रैक्टिस का ये रहा है। तो उसको मैं डॉक्यूमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ इस अपने प्रोजेक्ट्स में, ताकि राइट, वो ताकि वो चीजें सही जगह इम्प्लीमेंट हो, और जो रिसोर्स है, हमारा संसाधन है, वो सही जगह इन्वेस्ट हो। तो इस राइट, तरह प्रयास कर रहा हूँ। और अभी हाँ, अभी मतलब दिसंबर में विजिट किया था, जनवरी में हम्म, एक फेस्टिवल था उनका, सोहराई फेस्टिवल में। हाँ, ज्यादातर वहाँ पे संथाल कम्युनिटी है, हाँ, उनकी प्रेजेंस ज्यादा है, तो उनसे उनके फेस्टिवल में मैं गया था। तो हम्म, वो किस तरह से नदियों पे कनेक्टेड हैं, नदियों से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके राइट, रिचुअल्स नदियों से जुड़े हुए हैं, हाँ, और वो नदियों को किस तरह से देखते हैं, जल जंगल जमीन जैसे झारखंड में हमेशा बोला जाता है। तो वो उस नॉलेज सिस्टम्स को ना कभी वो डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, उनके राइट, एक्सपीरियंस, उन प्रैक्टिसेस को।
तो उस पर ज़्यादा राइट। फोकस करके मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो ग्राउंड्स पे मुझे दिख रही है, और चूंकि झारखंड से हूँ और ट्राइबल, मैं भी खुद ट्राइबल हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस पे और गहराई से काम करने की हाँ। आवश्यकता है। और जैसे सेकेंडरी सोर्सेस है, डेटास है, वो उसको मैं हम्म। कैसे इनरिच कर पाऊँ, ताकि मुझे जो बेसिक समझ है जो वो अच्छे से आ जाए और उसको मैं बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। इस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट पे और काम कर रहा हूँ, और शैलजा भी साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है, और ग्रेट। तो बहुत अच्छा काम करे हम लोग। थैंक यू शैलजा, ग्रेट। ये मुझे इस तरह के ग्रुप से मैं इन्वॉल्व किया, और अच्छा लगा मुझे। मुझे से अभी मैं लास्ट सेशन संकेत जी का देख रहा था, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे क्षेत्र में वेजिटेबल, जहाँ मेरा गांव है रांची से 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे वो वेजिटेबल्स का हब है। सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स हमारे उस पंचायत या प्रखंड बोल दें, तो उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो और यहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब सप्लाई होती है वेजिटेबल्स की, साउथ में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में। तो नियर स्टेट के जितने भी बड़े बड़े मंडी हैं, वहाँ पे जाती है, ट्रकों ट्रक जाती है। बट यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए पर्याप्त जो सुविधाएं होनी चाहिए ना, वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं करा गया है। इवन अभी झारखंड बने 25 साल हो गए हैं, बट इतना ज़्यादा प्रोडक्शंस है यहाँ सब्जियों का, फिर भी एक कोल्ड स्टोर सरकार की तरफ से अभी तक नहीं बन पाया है। हम्म। हाँ, ग्राउंड्स पे अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं, दो बनने का है, बट अभी तक वो ग्राउंड पेपर वर्क में फंसा हुआ है या क्या है नहीं पता। तो उस पे भी मुझे काम करने हम्म। की मन है, काम करने का मन है। तो बट पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म करूंगा, उसके बाद वो उस पे सोचने का जिस सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ करूँ। हम्म। ग्रेट। नहीं, थैंक यू सो मच मनोज जी। आप बहुत मतलब वैल्यूबल आपने बातें बताई हैं, और मुझे कई आइडियाज आ रहे हैं कि हम लोग इसमें थोड़ी बहुत मतलब कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे यदि हम लोग मैं जैसे कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी जल्दी कर सकते हैं कि जैसे क्यूल एटलस में इन्होंने अलग अलग नदी के अलग अलग भागों के बारे में बताया कि कहाँ पर कौन से चैनल्स वगैरह हैं। उस टाइप का डेटा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कि अ, नदी के किस भाग में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ है। अम, इसी तरह से जैसे चेक डैम्स वगैरह का बता रहे हो, तो ड्रेनेज नेटवर्क्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ पर चेक डैम्स नरेगा के तहत बने थे पहले और कहाँ पर नहीं बने हैं। तो उस टाइप के एरियाज भी आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं जहाँ पर नरेगा जैसे स्कीम्स में काम पहले हुआ है और पहले नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है उस टाइप के डेटा से कुछ फायदा हो सकता है, जस्ट ये जानने के लिए कि कौन से हाँ, एरियाज में पोटेंशियल होगा इस तरह का काम आगे बढ़ाने का? हाँ, अ, हाँ, ये तो डेटा एक बार देखना होगा मुझे भी, हाँ। श्योर नहीं हूँ। हाँ, ट्राई करेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ डेटा मिल जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम मैं भी गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहा था, तो कुछ हम्म। कुछ डेटा एक्सेस में है। हम्म। और हाँ, और एक चीज मुझे ये भी लग रहा था ना, जैसे क्यूल को लेकर के, कि हम्म। जैसे वो जिसमें मैप जो सेल्जन शेयर किया है, उसमें हम्म। मुझे एक कंफ्यूजन था कि वो दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम उन्होंने दिया है। हम्म। और जब क्यूल बेसिन्स का बात करता हूँ, तो वो हम्म। सबसे छोटी नदी है वो। हम्म। मतलब कितना 40 किलोमीटर्स का उसका ये फ्लोइंग हम्म। डिस्टेंस होगा। उसके बाद वो हम्म। डायरेक्ट बिहार में जाके मिल जाती है। फिर हम्म। भी उन्होंने फल्गु नदी जो कि चतरा में बहती है, हम्म। और हजारीबाग जो कि मतलब 200 किलोमीटर दूर है गिरिडीह से, हम्म। हम्म। उसके बेसिन्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। ओके। और हाँ, कोडरमा का भी उन्होंने जिक्र किया है। हम्म। तो मेरे को सही नहीं लग रहा था डेटा, क्योंकि
दोनों एक तो छोटा नदी है, ये 40 हम्म किलोमीटर का हम्म हम्म डिस्टेंस है, तो और उसके बाद ये लोग फल्गु, मोहना और ये सब नदियों का नाम जिक्र कर रहे हैं, जबकि चतरा का डिस्टेंस लगभग हम्म 300-350 किलोमीटर होगा, जहाँ से ओके ये ओरिजिन निकलती है नदी। ओके तो ओके हाँ, तो वो डेटा मुझे ना हाँ, डिफरेंट ये दिखा रहे थे, तो हम्म पता नहीं वो डेटा उन्होंने सही से यूज किया है, मैपिंग किया है या नहीं। तो हाँ तो ये इस तरह का दिख रहा था मुझे उसमें डेटा। राइट हाँ। राइट ओके ग्रेट नहीं ठीक है इसमें और इसमें मतलब पढ़ते भी हैं थोड़ा और लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस टाइप के मतलब रिवर बेसिन के अलग अलग पार्ट्स अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ पर शायद पोटेंशियल हो सकता है इस टाइप के एक्टिविटीज़ के लिए। अम, अच्छा दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जहाँ पर आप बता रहे हो कि ये फार्म पॉन्ड्स तालाब कुएं चेक डैम्स ये सब की डिमांड रखती है कम्युनिटी तो क्या ये नरेगा वगैरह के तहत ये इस टाइप के काम लिए जा रहे हैं या मतलब कम्युनिटी खुद ही या कोई एनजीओज हैं जो इन एक्टिविटीज़ को फंड कर रहे हैं। नहीं, नरेगा के साथ तो हो ही रही है, हम्म साथ ही साथ प्लस एनजीओस भी इसमें इन्वॉल्व है, हाँ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। और राइट बहुत सारे कंपनियां हैं जो सीएसआर का फंड इसमें इन्वेस्ट करती हैं प्रोजेक्ट्स के ओके थ्रू। ठीक है ठीक हाँ। है ठीक है तो मैं इसमें सही है। हाँ, ये हाँ करती हैं, और जिनका यस, यस है। हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। हालांकि कुछ एनजीओज हैं वहाँ पे, लगभग जितना हमने बात की वहाँ पे कुछ एनजीओ से, तो उन्होंने मेंशन किया कि लगभग 10 के आसपास कुछ एनजीओज वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें हम्म से एक दो ही ऐसे एनजीओज हैं जो कंपैरेटिवली बेटर हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं एटलीस्ट। हम्म बाकी आप जानते होंगे कि ज्यादातर एनजीओ जो हैं पेपर पर ही होते हैं, पेपर पे ही उनका काम दिखता है। पर वहाँ हम्म पे एक दो एनजीओज हैं जो कर रहे हैं। पर वो भी मुझे ऐसा लगता है, जितना हम दोनों ने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। जैसे हम्म आपको, जब आपने कोई डेवलपमेंट किया है वहाँ पे जाके, हम्म तो आपको निरंतर उसका चेक भी करना जरूरी होता है कि इफ इट इज ऑल राइट, इफ इट्स वर्किंग हम्म प्रॉपरली और नॉट। तो हम्म दैट इज नॉट हैपनिंग देयर। हम्म वो हम्म एक सिचुएशन है। फिर उसके अलावा आई थिंक बहुत ज्यादा तो चेक डैम्स नहीं है जहाँ, क्योंकि रिवर की स्ट्रीम ही नहीं है। तो हम्म हम उसको भी एक बार को मॉनिटर कर सकते हैं। हम लोग वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने चेक डैम्स हैं। अगर हम क्यूल सिर्फ झारखंड झारखंड की बात करें तो हम उतना कवर कर सकते हैं। मैं और मनोज जाकर, हम लोग इनफैक्ट प्लान भी कर रहे थे कि हम फील्ड विजिट करेंगे। तो इन केस हाँ आपको उसको लेकर कोई डेटा चाहिए होगा तो वी कैन हेल्प यू इन दैट। हम्म राइट और राइट वाटर कंजर्वेशन को लेकर के ना फॉरेस्ट का हम्म भी ट्रेंच, जिसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट एरियाज है उसमें ट्रेंच खोदती है। हम्म ट्रेंच खोद करके जो बारिश का पानी है हम्म उसमें वो पानी जाके ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम्म करती है। बट वो भी मुझे दिखा जहाँ तक कि वो जंगलों में करके छोड़ देते हैं, बट उसमें हम्म बहुत सारे कैटल्स का डेथ भी होता है। कैटल तो ओके जाएंगे ही वो जंगलों के लिए, हम्म डेथ भी होती है, हम्म और प्लस से ढलानों में हम्म होनी चाहिए वो ट्रेंचिंग। तो वो अपना मतलब खाना पूर्ति करने के लिए जहाँ तहाँ ट्रेंचेस खो दिए हैं, और वो प्रॉपर वे में नहीं किए हैं उसको, तो उसकी वजह से भी जो हम्म रिसोर्स संसाधन है ना वो बेकार हो रही है। तो वो सब इश्यूज राइट दिख। हाँ, फॉरेस्ट में घूम रहा था, देख रहा था तो। राइट और हाँ, और जहाँ से ये क्यूल रिवर निकलती है वहाँ पे हम्म मैंने देखा कि संथाल कम्युनिटीज है। तो हम्म बड़ा अच्छा सा उन्होंने वो तालाब जैसा कुछ बनाया है पौंड को हम्म लेकर के। तो हम्म वो डायरेक्ट पहाड़ों से आने के बाद उस पौंड में पानी हम्म जमा हो रही है। हम्म उस गांव के लोगों को ना वो पानी प्रॉपर मिल रही है, सालों भर राइट कैटल के लिए भी मिल रही है, गर्मियों में भी,
हाँ, जून मई जून तक पूरा पानी रहता है उसमें, तो वहाँ पूरा गांव ठीक है। और हम्म। उस तालाब से सिंचाई वगैरह भी अच्छे से कर रहे हैं। बट हाँ, राइट। बट इशू वहाँ पे कि पानी तो है, अवेलेबल है, बट मार्केट जो उनके क्रॉप्स को जहाँ सेल कर पाएंगे वो काफी हाँ। दूर में है। राइट। हाँ, तो वो राइट। जिस है वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी और पठारी एरिया है हम्म। और मार्केट की तरह से लिंक नहीं है। तो हम्म। उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो बस सीजनल अपने लिए लगाते हैं, और कुछ मात्रा में जब संभव होता है उनको सेल करने का, तब वो सेल हम्म। कर पाते राइट। हैं। और राइट। एक चीज दिखा मुझे वहाँ पे कि अभी जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड्स है। हम्म। तो मिलेट्स का वहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा है। राइट। हाँ, मिलेट्स राइट। को करने का, हाँ, हम्म। ये सब चीजें राइट। मुझे पे दिखी थी। हाँ, नहीं, सही है, सही है। तो एक और आज शायद उतना समय नहीं है, लेकिन एक और कोस्टैक में ही एक हम लोग ने ऐप भी बनाई है, कॉमन्स कनेक्ट। तो ओके, उसके ज़रिए जैसे जो लोकेशंस पे चेक डैम्स डिमांड कर सकती है कम्युनिटी, या वेल्स और प्लांटेशंस, इस टाइप के किचन गार्डन, इस टाइप के स्पेशली नरेगा के तहत जो चीज़ें फंड होती हैं, तो ऐप पे वो सारे डिमांड्स हम जियो टैग कर सकते हैं। और साथ में डेटा भी देख सकते हैं कि क्या चेक डैम जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली ड्रेनेज चैनल है या नहीं। तो थोड़ा डेटा वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा अच्छा हो जाता है कि सही डेटा निकल के आता है। और ऐप के थ्रू फिर जो भी हम लोग ने जियो टैग किया है उसका एक डीपीआर बन के आ जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि किस गांव में किस टाइप का स्ट्रक्चर डिमांड किया गया है। और उसको फिर ग्राम सभा में पारित किया जाता है और आगे पंचायत वगैरह में उसको लेके आगे जा सकते हैं। तो ये कई हम लोग के एनजीओ पार्टनर्स वगैरह हैं जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ओके, करीब 500 गांव में उन्होंने इस टाइप के डीपीआरस बनाए हैं, और जो अब आगे ग्राम सभा के जरिए पंचायत और नरेगा में फंडिंग वगैरह के लिए अब उस पे काम चल रहा है। तो ओके, मैं ईमेल पे एक बार कनेक्ट करते हैं, और अगर इस ऐप का भी फायदा हो सकता है वहाँ पर प्लानिंग वगैरह आसान बनाने के लिए, तो मतलब वो हम लोग पूरा बता सकते हैं कि कैसे उसको यूज़ हम्म, करना है और बिल्कुल, सब कुछ उसका। ग्रेट। नहीं, ये बहुत अच्छा रहा मनोज और शैलजा, इसके ऊपर डेफिनेटली और काम करना शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग ये डेटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं और एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिवर यस, रिजुविनेशन एक्टिविटीज़ के लिए। यस, ग्रेट। कूल। तो आज लंबी कॉल हो गई। अनन्या डिस्कस करना चाह रही थी ग्राउंड वाटर वगैरह का, तो अनन्या, इफ़ यू स्टिल देयर, हम लोग कुछ क्विक डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं तो हम अगली बार भी मिल सकते हैं। सर मैं जस्ट ये कर रही हूँ कि ग्राउंड वाटर लेवल के ट्रेंड्स दिखाऊंगी एक्सटी बूस्ट और एलएसटीएम को कनेक्ट करके। ओके। ओके। और मैं ये सोच रही थी कि रेनफॉल डाटा उसका की फैक्टर होता है, तो उसको हम्म। रेनफॉल डाटा को लेके ग्राउंड वाटर डाटा के साथ कोरिलेट करके या। उसको दिखाते हैं, तो राइट। उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। राइट। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही है। तो आप ये अर्थ इंजन वगैरह यूज़ कर रहे हो इसके लिए? ये सर अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, अगले फ्राइडे ओके। से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। कूल। मे बी मैं जल्दी से आपको, जस्ट सो दैट इट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड, आई विल जस्ट शो। तो इस टाइप के जो डेटा सेट्स हैं ये सेम अर्थ इंजन ऐप पर ही अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे हम लोग ने इस टाइप का डेटा लोड किया हुआ है। CGWB है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने
डगवेल और बोरवेल का डेटा कई लोकेशंस के लिए पॉपुलेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अब जैसे हम लोग को ये दिख रहा है, तो ये काफ़ी सारे एक्चुअली ये ऐप हम लोग को थोड़ी इम्प्रूव करनी है। अ, ये क्योंकि हम लोग ने बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी कि जनरली लोग देख पाएँ कि क्या क्या डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, तो एनालिसिस के लिए ये उतनी यूज़फुल नहीं है अभी। तो इन सब पॉइंट्स पर इस टाइप का डेटा है कि ओवर द इयर्स, अब जैसे यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी मिसिंग डेटा था इस पॉइंट पर, लेकिन अलग अलग ईयर्स में 2006 सीज़न 4 में ग्राउंड वाटर लेवल कितनी थी, 2007 सीज़न 1 में ग्राउंड वाटर लेवल कितनी थी, 2007 सीज़न 2 में ग्राउंड वाटर लेवल कितनी थी। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि डेटा बहुत कंसिस्टेंटली पॉपुलेट नहीं हुआ है। अम, अ, जैसे हाँ, इसमें काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो यू विल फर्स्ट हैव टू थिंक कि अ, मतलब राइट कि वो वाले डेटा सेट्स यूज़ करने चाहिए, डेटा पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए, ये जो मेजरिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर मतलब मिसिंग डेटा कम है, क्योंकि उससे फिर आपको मतलब ट्रेंड्स वगैरह पूरे दिख पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो डेटा सेट्स एक्चुअली हैं, वो यहाँ पे आप इस एक्सेल लिंक से गूगल शीट खुल जाएगी, यहाँ पर ये लिंक्स हैं जहाँ पे आप इन डेटा सेट्स को डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट? सारे ग्राउंड वाटर लेवल्स और सारी चीज़ें, तो कोड स्निपेट्स भी हैं अर्थ इंजन में लोड करने के लिए, और ये बाकी इनके डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स भी हैं, रास्टर या जियोजेसन लिंक्स वगैरह। तो तो इस टाइप का डेटा आप यूज़ कर सकते हो ग्राउंड वाटर लेवल का, यहाँ से डाउनलोड करके, एंड देन यू विल हैव टू कुछ भी प्रिडिक्शन वगैरह करना है तो अर्थ इंजन को ही यूज़ कर सकते हो, और अर्थ इंजन पे रेनफॉल डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हो। बाकी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी वगैरह में यूज़फुल होगा कि स्ट्रीम ऑर्डर क्या है उन एरियाज़ के ऊपर, कैचमेंट एरिया क्या है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो इस टाइप के कई सारे यहाँ के भी एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स और बाकी अर्थ इंजन पर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो टू मतलब सी इफ यू कैन प्रिडिक्ट कि किस एरिया में क्या ग्राउंड वाटर लेवल है, या वो चेंज कैसे हो रहा है ओवर द इयर्स। जैसे मान लीजिए आप 10-10 साल के चंक्स ले लो कि किस साल में कम हुआ है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इम्प्रूव हुआ है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में फिर कम हुआ है, तो इस टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ग्रेट, कूल। तो ठीक है, और ठीक है, तो फिर अगर और कोई अभी पॉइंट्स नहीं है तो हम लोग रुक सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग कैसे बंद करनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, ठीक है, तो दिस वाज ग्रेट, थैंक्स एवरीवन। तो आप राइट स्टार्ट यूजिंग सम ऑफ दीज थिंग्स, कोई भी यहाँ पे इश्यूज हैं तो आप लोग गूगल ग्रुप वगैरह पे ईमेल कर सकते हो, और वी विल रिस्पॉन्ड, एंड या आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी विद of things to do. So let's work on these ideas now. Yeah. ठीक है, तो अभी के लिए फिर I'll close the call, and we can continue our meetings next week. Yeah. चलिए, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।